Dear students, let us have our last topic of chemical kinetics. In fact, we have studied it earlier also. Let us have a look on it. Dependence of rate on concentration of reactants. Quantitative aspect. As chemical reaction proceeds, concentration of reactants decreases, as is shown by graph, and that of product increases. जैसे टाइम बीता बच्चे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती, प्रोडक्ट की क्या बच्चे over rate of reaction also decreases with passage of time because rate is directly proportional to concentration of reactant. Rate of reaction क्या होगा बच्चे increase होगा with passage of time. फिर concentration क्या हो रही है बच्चे it is decreasing, therefore rate will also. The effect of concentration on rate of reaction was first studied by Goldberg and Baek in 1867 and they put forward a law which is called as law of mass. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ law of mass action. law of mass action की मदद से Goldberg and Baek ने हमें बताया कि how the rate of reaction is related to concentration. उसने क्या कहा बच्चे उसने कहा rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to power equal to their respective stoichiometric coefficient. जैसे मैं पहले बता चुका हूं बच्चे law of mass action is purely theoretical. It is based on balanced equation. ये कहा गया कि rate is directly proportional to product of molar concentration of reactant raised to power equal to their respective stoichiometric coefficient. इस केस में कैपिटल ए रेज पावर स्मॉल ए कैपिटल बी रेज पावर स्मॉल बी. लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? नाउ व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? ये हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ भी चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. Experimentally it has been found that in certain cases, not in all cases, in certain cases the rate may not depend upon all concentration terms of A and all concentration term of B, and it may not depend upon small a and small terms. In some cases it has been found, not in all cases. So however experimentally it has been found that in certain cases the rate may not depend upon all the small a concentrated terms of A and all the small b concentrated term of B. Let experimentally it depend upon alpha concentrated term of A, capital A, reactant, and beta concentration term of B, capital reactant. Alpha, beta, A भी दर numbers, stoichiometric coefficients. जैसे A सपोज करे 4 है, अल्फा सपोज करे कितना है बच्चे 2. मतलब यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ कैपिटल A is 4 सपोज करें, बट रेट इज डिपेंडिंग अपॉन 2, अल्फा इज 2 बच्चे. ये है. इसी तरह से बीटा जो है दैट इज नॉट इक्वल टू B स्मॉल. सपोज B 3 है तो बीटा 1 है, सपोज कर रहे हैं हम, है ना. तो लेट इट डिपेंड अपॉन अल्फा ऑफ A एंड बीटा ऑफ B. दिस इज एक्सपेरिमेंटल. तो इन दिस केस एक्सपेरिमेंटली रेट क्या होगा बच्चे? रेट इज प्रोपोर्शनल टू A रेज़ पावर अल्फा. एक्सपेरिमेंटल है. पहले हमने लिखा दैट वाज ऑन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड इक्वेशन, दैट वाज थ्योरेटिकल एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना. ये आ गया एक्सपेरिमेंट. रेट इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू A रेज़ पावर अल्फा B रेज़ पावर बीटा. ठीक है. तो व्हाट इज alpha and beta? Alpha and beta are the concentrated terms of A and B on which rate actually depend. जिनके रेट बच्चे एक्चुअली क्या करता है? डिपेंड करता है. ठीक है. एंड अल्फा प्लस बीटा हम पढ़ चुके हैं. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सम ऑफ कंसेंट टर्म ऑन व्हिच रेट एक्चुअली डिपेंड, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये आपको याद होना चाहिए, ये पढ़ भी चुके हैं. दिस इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ व्हाट? रेट of reaction
and its relation with what? Concentration. So this rate law expression which expresses in equation first is called as rate law equation. इसको क्या बोलते हैं बच्चे? Rate law equation. This expresses the rate of reaction in terms of molar concentration of reactant with each concentrate term raised to power equal to number of concentrate term on which rate actually depend. On which rate actually depend. याद रखिए, जो रेट लॉ इक्वेशन है ये रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन देती है विद कंसंट्रेट टर्म्स ऑन विच रेट एक्चुअली डिपेंड. जो हमने पावर दी है कंसंट्रेट टर्म्स को अल्फा और बीटा, व्हाट आर अल्फा बीटा? ऑन विच रेट एक्चुअली डिपेंड. इफ ए कैपिटल ए इज 1 मोलर, कैपिटल बी इज 1 मोलर, पता है बच्चे आपको, ये रिपीट करने वाली बात है. रेट क्या होगा बच्चे? के. इट मीन rate of reaction is equal to rate constant, or we can say rate constant is equal to rate of reaction when molar concentration of each of reactant is unity. A और B, जब हम कैपिटल A और कैपिटल B इसके बराबर लेते हैं बच्चे 1 मोल पर लीटर, यूनिटी is equal to 1 मोल पर लीटर, है ना. Then R is equal to K. So K is equal to rate of reaction. But कब? When molar concentration of each of reactant is unity. ठीक है ना बच्चे? It means K is also called specific reaction rate. It is equal to rate of reaction under specific condition. So K is also called specific reaction. It was the last topic of chemical. Thank you. Next, we will study our next chapter of chemistry.